This brings me to the next segment, which is how to build client relationship. So, how do you build that rapport with the client I and that just stick trust? to my basics. I just stick to my basics. My basics is my knowledge, whatever I've learned, right? Delivering it with the best of intentions, right? So that comes along. So your rapport building with your, so one client, right? One good client will give you four more, right? And one bad experience of your client with you will take away 10, will take away 10 and more, right? So अच्छाई अगर आप अच्छा कर रहे हो, and you should be patient enough. So when it comes to rapport building, Hmm. योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी कि ये बस मेरे से पैसे ले ले, मतलब मुझे पैसे दे दे, मुझे पैकेज सेल करना है इसको, ये मेरे से ही पीटी ले, ऐसा नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और वो टाइम से ही आएगा, वो एक दो दिन में कोई आपके साथ रेपो बिल्डिंग नहीं हो जाता है, राइट? यू शुड बी प्रोफेशनली प्रोफेशनली सेन इन विद योर थिंग। यू शुड नॉट बी टॉकिंग इधर उधर का कुछ भी। यू शुड बी इन टू योर ट्रेनिंग। व्हेन यू आर ट्रेनिंग समबडी, उसने एक घंटे का पैसा दिया आपको, राइट? For an average person, they pay you per hour. So that 1 hour is not, वो यार एक ही घंटा तो है आपके लिए, एक घंटा है वो, जिस बंदे ने आपको पैसे देने, that person is investing their time and their money with you. So Right. if you can value and you can make that person understand the value, your repo is going to be a long term, Yeah. right? वो कभी कभी भी क्लाइंट, आप किसी को अगर वैल्यू ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग इन एन, अब हम सभी फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, अगर किसी फ्लाइट का एक्सपीरियंस हमारा खराब होता है, हम दोबारा उसकी टिकट नहीं लेते। Hmm. हम सोचते 500 रुपये और डालो, दूसरे उसकी ले लेंगे। बिल्कुल सो इट्स बिल्कुल। नॉट जस्ट अबाउट के सस्ती फ्लाइट एंड एवरीथिंग, सो इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट सस्ती ट्रेनिंग, इट इज अबाउट द क्वालिटी, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कोच you deliver, Hmm. right? And so this is one thing. Second thing is being knowledgeable and being present in your session, right? Most of the clients, and like generally I'm just talking, I don't want to say कि सभी ऐसे होता है, ऐसा बहुत सारे कोचेस हैं, फोन हाथ में ही रहता है, हाँ सर 2 सेट और मारो, हम 5 सेट है, आप चला भी रहे हो, आप इधर भी देख रहे हो, आजू बाजू वाले को भी देख रहे हो, तो दैट पर्सन वुड से ना, यार अभी जब मेरे को इसको इसको ट्रेनिंग देनी थी, द पर्सन वाज सो मच इनटू मी, अभी 2 सेशन हो गए, अभी इधर भी इससे भी बात करता रहता है, उससे नहीं तो खुद के ट्राइसेप और बल्ले देखता रहता है, राइट? ये देखती रहती है, खुद का ही फिगर देखती रहती है, बिकॉज देयर आर मिरर्स अराउंड इन द जिम, राइट? So yeah, give up everything and be into your work. Now this is something, it not just applies into fitness industry but in every Refield. any work, Yeah. ये हर जगह है। तो अपने बेसिक्स, अपने आप को डिसिप्लिन रखो, खुद के ऊपर भी काम करो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ, एंड कीप एडिंग नॉलेज टू योरसेल्फ। अगर किसी ने, क्लाइंट ने बोला है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, स्टडी अबाउट इट। इफ यू डोंट नो इट, डोंट आंसर इट ऑन द स्पॉट। मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, बट इफ आई गेट सम काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर द पर्सन इज सेइंग कि मुझे इस पर्टिकुलर मूवमेंट में पेन है या वो है, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई। यू शुड डू सम डायग्नोस, आप स्टडी करो, आप पूछो, द राइट पीपल यू कैन आस्क, यू नीड टू गो थ्रू इट, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ो एंड देन यू डिलीवर, राइट? जो आपको पता है उसी के पीछे मत रहो, यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, एंड हेंस व्हेन यू add, when you are disciplined, when you're doing, sticking to your basics and you are into your work, your repo is built, your Absolutely. repo is definitely built, and you'll always get more and more of client. So far, I mean, with the grace of God, I don't have to purposely, as I said na, I've been a little lucky also, but yes, कभी ये नहीं हुआ है कि बोलना पड़े यार काम नहीं है, भगवान की दया से काम आगे से खुद आया है कि हाँ, Right. and that is why, because people you have already trained. I mean, I feel that there are incidences where when I've been in the market or somewhere out and I've met somebody and the person calls my name, hey Amrita, and I'm like yes, and there's like, we had a session with you, and then I had to realize अच्छा कब, and then it's like ये हमारा एक योगा सेशन कॉर्पोरेट का अगर मैंने कभी लिया, like यार last time we had a session with you, आपने लिया था, you remember, and like I feel really good about it, like यार वो 2 साल पहले एक सेशन लिया था मैंने, and these Hmm. people still remember me Yeah, and yeah, they're following me on my social media or whatever, yeah. but if they remember you, that means you have done some impact, वो 1 घंटा या 20 मिनट whatever session you have taken, if that has put in a little memory of yours in their head that they still remember you, that means you're somewhere, कुछ तो आपने justify किया है for Hmm. whatever you've invested on yourself. So just do your basics. Yeah. So being present in the session, not so In the knowledge session. से कुछ नहीं होगा अगर आप
का ध्यान बार बार घड़ी पे रहता है, यार 1 घंटे का टाइम था, 50 मिनट ही हुआ, अभी तो 10 मिनट और बचा हुआ है, क्या करूं मैं? ऐसा हाँ, भी। अब क्या कराऊं? अब अब क्या क्या करूं? खाऊं? थक नहीं रहा। राइट, सो पर दैट्स व्हाट। पर मैं बोलूंगा कि इसमें भी देर आर टू वे सिचुएशंस इन दिस। इसमें आई वोंट से कि एंटायरली ट्रेनर की फॉल्ट हो सकती है। क्या पता कभी कभी क्लाइंट बहुत डिफिकल्ट हो टू हैंडल। So have you faced that situation where the client is very difficult to handle? How did you do वो that? और मजेदार होता है, ऑनेस्टली। आई लाइक आई मीन दैट इज मोर एक्साइटिंग। अच्छा। इजी तो सभी ट्रेन कर लेते हैं। या इजी तो सब ट्रेन कर लेते हैं ना, कि आया बढ़िया से वर्कआउट किया, डन हो गया। व्हाट या इज देयर फॉर यू टू लर्न इफ यू आर नॉट हैंडलिंग अ हार्ड क्लाइंट? वो आपको आपके ऊपर बहुत अच्छा, मतलब इट्स लाइक अ एग्जाम फॉर यू, या ऑफ दैट कोर्स। हेल्प्स यू ग्रूम। वो आपको ना मेंटली और प्रिपेयर करता है कि मतलब ये हुआ यार, ये तो सुन ही नहीं रहा क्लाइंट। देयर आर क्लाइंट्स लाइक नहीं, ये तो नहीं करेंगे, स्ट्रेट हम्म अवे। हम्म। So there is a subtle way of telling them and letting them know कि भैया ये डोमेन एक्सपर्टीज मेरी है, आपके बेनिफिट के लिए या आपकी आपके ये पर्टिकुलर एरिया के लिए ये कराना जरूरी है। सो वो आपको दैट इज अगेन टैक्टफुल। वो आपको आना चाहिए हाउ टू डील विद इट। जैसे अब ये हमें ना एग्जांपल हम दोनों को ही पता है, या हमने बहुत बार सुना है कि डॉक्टर हमें पीली दवाई बोलेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे हमें नीली वाली खानी। यू रिमेम्बर दिस? राइट। सो अभी कभी ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हाउ डू यू डील विद दैट? कभी I हुआ है give them कि- options. I give them options. अच्छा। Like there are clients जो मतलब हमारी फेवरेट है स्पोर्ट्स, बट उनकी फेवरेट नहीं है, राइट। बट लेग्स तो ट्रेन करने हैं। हम्म सो जिस दिन नहीं होता है, सो आई गिव देम ऑप्शंस कि ऐसे नहीं तो ऐसे। वो बारबल देख के भाग जाता है, नहीं यार वो जिस दिन मुझे देख लिया उन्हें बारबल दे लेना, नहीं अमृता प्लीज आज नहीं। सो हम्म आई वाज लाइक ट्रेनिंग तो करना है तो चलो गॉबलेट से काम चलाते हैं। तो 20 किलो की बारबल से तुम्हें नहीं रखना, 20 किलो का डंबल पकड़ लो, दैट्स योर हम्म। चॉइस। तो ट्रेनिंग तो होनी है। सो आई मेक इट दैट वे। पर ये तो चलो हमारी ट्रेनिंग रिलेटेड हो गया कि ट्रेनिंग हम उस तरीके से नहीं दे, बट कभी ऐसा भी होता है द क्लाइंट इज aggressive and in a very different zone where they are almost on the verge of abusing also. कभी कभी ऐसा होता है, मतलब हमारे अभी रिसेंट उसमें जहाँ पे हम अच्छी जगहों पर ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, लेकिन अग्रेशन एक ऐसी चीज है जो आ जाता है कभी कभी क्लाइंट के अंदर, एक वो आई कि एग्री, आई एग्री। I've dealt that. सो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ और हाउ डिड यू डील विद दैट? Uh, again, not mentioning the name, and this is in last year's experience, last to last year experience around like October 21. हम्म So we do like we were talking about PARQ and forms and everything, right? So I asked this person because as coaches, if you're be it you are a freelancer or you're working with a company, you are accountable for every session you take, right? राइट। So हम accountable हैं। How would you do that? आपको कैसे पता आपने सेशन लिया? So like I take signatures, we have a proper sheet, वे assign कर दो, date और sign का रहता है। So but this was a new client and she wanted to train with me. And unfortunately fitness industry में as coaches बहुत अच्छी इज्जत नहीं है। I mean we still lack that, so, for whatever reason, like I mean there are plenty, but yes, वो थोड़ा सा आपको ऐसा देखते हैं जस्ट ट्रेनर, राइट? वो थोड़ा सा आ जाता है कि यार which is okay, I'm fine with it, but you have to वो रिस्पेक्ट तो टाइम से आप अर्न कर लेते हो when you're constantly training somebody, they started, you see the change. But yes, so this is a case where the lady came to me and she said, okay, you're going to train me. I was like, of course I will. And then there was some paperwork, so I asked her to put the signatures on, and then she straight away did that, and she's like, come on, keep the papers aside. So I was like, so I took a pause and I was like, I'm sorry, this is just information, I need this to begin training. She's like, training karao, baad mein baat karenge. So before the training, again that was something mandatory for me. So thoda, because there's a system, I said, so I could say is like, I can, so again, right choice of word. या Just because the other person is aggressive, first thing, you cannot lose your own temper, जा मैंने right? है? जा हाँ, मैंने चल नहीं करा रहा है, हाँ, किसी और से कर ले फिर। नहीं, no, you cannot do that. If you do that, then there's no difference. इसलिए। फिर तो कहानी अलग है, right? Then don't be, because you'll be facing everybody, हाँ people like this, right? So as I said, na hard customers say na, it gives you more learning. So that day I learned how my yoga helped me.
My yoke could help me because I was under control. Like I was talking to myself, no reaction. I was like, Amrita, and if you keep a smile on your face, गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, right? So I was wearing a mask and I said, and Yes, you. suddenly when I said I cannot, what I said, I did not say I cannot. I was like, then I'm afraid I won't be able to go ahead with the session. So that's the exact line I trained. And then the lady was out loud and she started shouting, call the manager, this, that, blah, blah, whatever happened. I was like, yes, please. I was still at the side. I was just talking to myself. Amrita, calm down. I was like, just बोला keep. बोला नहीं, मैं ही तो मैनेजर हूँ। नहीं संभाल। मैं फिर तो मैं क्या बोलूं? Like yeah, and then the whole ruckus was created, and then when the XYZ person came tries to handle for handling the situation, she started out loud again, and then she pointed towards me. She just looked at me. Who the fuck this trainer is? हाँ, And when that happened, I took off my mask and I'm like, sorry. And then I had to say it because you just can't be. I mean, again, my body language was like I was very and I was very strong. I stood tall and I just took off my mask and I just said, I'm sorry, you just said something. And then she could see it on my face. My words were very polite, but the expression on the face, with a very stern way, I said, I'm like, sorry, you're saying something. She's like, no, don't take it personal. And like, you cannot get personal with me. And then I had to, when I had the third person with us right in front of us, like, yes, I denied the session. I cannot go ahead because this is a right to information to right. you as a client. Then she was shouting, then she stopped for a moment, and that was my time to speak because she was not, first of all, chupi nahi ho rahe the wo. The Hmm. moment she stopped, I took the paper and I said, this is a right of information for you to understand. What if you get injured in this session, I can deny. But if you have your signature, that means the session has been done. And that was a turning point. Then she was like, no, no. And then she's like, okay, fine, I'll sign it. So that happened. And then again, even after that, after she signed, I did give her a session. वो session हुआ बिल्कुल। and absolute, I had nothing in my mind because I knew I had to give a session. That's a part of my job. I was supposed to do it. So I went further with the session. And after the session, the lady said, sorry, हाँ, because during the session there was nothing on my face. I took the session exactly the way I take it. वो हमारा जो starting was ऐसा, but बाद में जब when she said, she was like in a very होता ना कि sorry बोल के sorry नहीं बोला, but that was pretty visible. हम्म, That was pretty visible. She's like, yeah, nice session, I like it. And then she's like, yeah, okay, don't mind what I said. So हम्म, that was like a different घुमा के sorry बोलता है. She's like, but I like the session, but please don't mind. And I was like, that's totally fine. We'll meet you in the other session, and that was it. So yeah, that happens. Sometimes people dog. Some people will come and they'll force you, come ले लो और कम कर दो, negotiate। ज्यादा सेशन दे दो, वहां पे भी मिलता है, यहाँ पे भी है. So I very politely I just said that, of course ma'am, आपका choice है. These are my rates, right? If I'm charging you for an X service, for X amount of hours, for X amount of number of sessions, these are my rates. You asking for less? Go ahead. It is आपके ऊपर choice है, आप कोई भी trainer ले सकते हो. But राइट। then it would not be me. If you are asking me, so yeah. So इसी पे मैंने एक वो post भी डाला था. It's like you cannot uh, sit in economy and ask कि मुझे business class की service मेरे को business में भेजना क्योंकि plane same है. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Right. So again, it is the service. It's a service. The quality of service differs, right? So you're paying for it. So hence my experience to you, if I'm delivering something, this is also value to me. We invest on our knowledge. राइट, We invest time. We invest money. It takes hours of thing to learn things, and that's how we deliver. राइट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एजुकेशन। बिकॉज जो भी चार्ज करते हैं क्लाइंट से, किसी भी जो भी हमारा रेट होता है, दैट इज Mhm. बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो भी है Mhm. हमारा करेंटली, और जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उस हिसाब से। देर इज नो फिक्स्ड रेट एज सच, वी नो इट। फिटनेस के अंदर कोई इस तरीके का फिक्स्ड रेट नहीं है कि ऐसा ही होगा, अनलेस देर इज सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब काम कर रहे हैं। और सो we charge a particular amount based on our certifications, based Mhm. on our education. So, how do you manage? How do you keep yourself abreast with the latest in the field of fitness? How do you do that? So we keep a check around, of course. We keep a check on what is a new style of training.
right? And what's when you say something, what's a new equipments? Because now there is an always an upgrade in the machinery, also the gym equipments also. Yeah. What is the reason of that? Why is this machine better than the first one? Or what does this particular workout do? So yeah, you need to be up with it, and you should also practice. I mean, like being coaches, being strength coaches or yoga coaches, like अगर आपने कोई चीज नहीं करी है ना, तो आप उसके बारे में बोलिए मत। Hmm. नहीं करी इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको नहीं पता है कि टीआरएक्स कैसे काम करता है, सो एक सेशन लो। आई वुड से एज एन इंडिविजुअल आई वुड लव टू समथिंग विच आई डोंट नो, मुझे लगता है मुझे वो करके देखना चाहिए। देन इट विल गिव मी अ बेटर आइडिया दैट हाउ दैट थिंग इज मोर इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव और कंपैरेटिवली उसका क्या होगा। सो आप वो आंसर आपके अच्छे हो जाते हैं। इफ somebody comes to you कि नहीं मुझे ये HIIT करना है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, सो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट? व्हाट इफ somebody says कि मुझे सिर्फ कार्डियो करना है, Hmm. मैं योगा घर पे कर लेता हूँ या मैं खुद से कर लेता हूँ, और मेरा मैं बॉडी वेट वर्कआउट कर लेता हूँ और मुझे सिर्फ ये करना है, आई जस्ट वांट टू। सो knowing the right answers, knowing those training how they work, what is the advantage of anything, that's how it gives you more answers, right answers, correct way of actually putting the information through. So wo karo aap, and do whatever is available around as coaches. If you're not upgrading yourself with anything new in the market, I mean that pushes you back, because But हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा, तो because थोड़ा बहुत तो अपग्रेड होना चाहिए। या मैं उसी के ऊपर पूछ रहा था कि डू यू थिंक देयर इज जैसे मार्केट में बहुत सारी नई चीजें आती रहती हैं, क्या हर चीज करनी जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, तो कैसे हर पता चीज चले, जरूरी नहीं है अभी। कैसे पता तो चले कि ये सही है या नहीं है? हाउ डू यू गेट टू नो दैट? so if you are a coach, if anybody is who's a coach, तो अगर आपने कोई अगर स्ट्रेंथ कोच है, फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज एन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, you know the science, you know the training, and then if there is something, uh, how do I put it, like for something which is like dance workout, there is something called a dance workout, right? So, कितना डांस कर लोगे as a coach? How much dance would you do? One odd, I mean, like once in a week is still good for you, because cardio endurance कुछ भी कर लोगे, आप दौड़ना नहीं चाह रहे हो, चलो कूद राइट। फांद करके, it also works like an aerobics for you, right? So that will help you. बट एज अ कोच, बट अगर अब आपने सिर्फ अगर कोई डांस कोच ये बोले कि स्ट्रेंथ नहीं करना चाहिए, तो उसके पास वो नॉलेज नहीं है। राइट। बट स्ट्रेंथ कोच को पता है ना एडवांटेज इसकी क्यों है, और उसको कितनी बार आप कर सकते हो। सो दैट्स हाउ इट इज। सो अगर नया फॉर्म ऑफ डांसिंग आया, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव जुम्बा, राइट? So you cannot do Zumba 6 days in a week. I have also done my Zumba certification, and then I got to know कि ये 6 दिन तो नहीं कर सकते। Back then I was not that educated, तो मुझे लगता था जो कुछ आ रहा है ना सब कर लो, कि आपको करना पड़ेगा, so that you can upsell yourself. Now lately I realized that as with time you realize कि you need to be more knowledgeable and more sensible in what addition you are doing, what kind of fitness form you are learning, हम्म। right? तो वो आप देखो कि आप सब कुछ जस्ट बिकॉज वो हाइप हो गया, मार्केट में आ गया, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो सिर्फ मार्केट में है इसलिए करना है, या इज इट एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू यू, एंड देन अंडरस्टैंड इज इट ऑल्सो गोइंग विथ योर forte, right? For example, a Hatha yogi can do Ashtanga Vinyasa because that's also a form of yoga, and they can also learn Iyengar style yoga, which is a prop yoga. It was later said as a prop yoga, but that was Sri Iyengar ji never wanted कि उसको prop yoga बोल के market किया जाए, but then that's how What it is became that? popular. What is that again? Prop yoga? Prop yoga is Iyengar योगा एक फॉर्म है जिसमें आपका चेयर है, डफर्स है, योगा ब्लॉक्स हैं, रोप्स हैं, वो सब यूज की जाती हैं एज एन असिस्टेंस, राइट? सो देन इट बिकेम क्वाइट पॉपुलर, यस, बिकॉज हर कोई उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इट वाज लिटिल इजी फॉर देम टू गेट इनटू द आसन एंड लर्न द आसनास। सो देन इट वाज जस्ट मार्केट, वो एक बार प्रॉप योगा के नाम से हुआ तो बहुत हो गया। सो आयंगर जी का ये एक स्टाइल है योगा का, right? So like Hatha Yoga से ही निकला हुआ है, then people who learn, they do Ashtang and then this. So yes, it's a value added ना for a Hatha yogi who knows, आपको पता है कैसे, but बहुत सारे like I said ना, हर किसी का बॉडी एक सा नहीं होता है, right? आपका लिम लेंथ डिसाइड करता है आप कितना स्क्वाट करोगे, आपका डेडलिफ्ट कैसा होगा। अभी किसी को लोअर बैक कितना मुड़ता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो अ डिफरेंट पॉइंट ना, हर किसी का फ्लेक्सिबिलिटी एक सा नहीं होता, हर किसी का चक्रासन फॉर एग्जाम्पल एक सा नहीं दिखेगा, Right. right? So it takes practice, it takes patience.
So what you are adding, understand, is it going to add value to your present knowledge? अपने डोमेन एक्सपर्टीज आप पहले फॉर्म कर लो. दैट्स व्हाट आई से कि अब आप अगर स्ट्रेंथ में आपको लग रहा है कि एरोबिक्स बहुत चल रहा है तो मैं एरोबिक्स सीख रहा हूँ, क्या आप सिखा सकते हो वो? आर यू दैट गुड? यू कैन बी. आप मल्टीपल नहीं कर सकते हर चीज. तो आपके हिसाब से आई एम नॉट अ गुड डांसर. मैंने जुम्बा किया था. लेटर ऑन आई डिड नॉट कंटिन्यू बिकॉज दैट वाज नॉट एडिंग वैल्यू टू मी एज अ कोच. बिकॉज मुझे एज आई अंडरस्टैंड आप 6 दिन नाच नहीं सकते और आप सिर्फ डांस कर करके आप अपनी बॉडी को फिट नहीं रख सकते हो. उल्टा आप कमर दर्द और नी का पेन जरूर ले आओगे इफ यू आर नॉट डूइंग other forms of fitness, which is strength training. Base आपका ये है. That has to be a part of you. Right. And then in order to perform good on the strength area, to become more functional, you have to have good range. So flexibility. So yoga needs to help you with that. So that's why these became my most important thing which I deliver, that's how I train people. But yes, knowing is important, but आप किसमें आप interested हो, that needs to be taken care of as Right. well. So, what all certifications have you pursued till now? I've done Pilates. I'm a Pilates instructor. I'm a stability ball coach. I've done my recently. I can done my nutrition also, which is weight management and obesity for kids, and workout exercise expertise for women health. So that I've also done. So yeah, that has added value because understanding nutrition is extremely important. कि हर वो चीज जो मार्केट में हर तरह की डाइट है. आई मीन अभी तो डाइट भी मार्केट में बहुत सारी है. और अगेन द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू स्टडी, यू गेट टू नो सर्टेन कंक्लूजन कि क्या इम्पोर्टेंट है. आई मीन हाउ वुड योर एंड एवरीबॉडीज बॉडी वुड वर्क. नाउ पीपल से ना कि मेरे ऊपर ये वाली डाइट अच्छी नहीं लगती, मतलब ये सूट नहीं करते. ह्यूमन ही है, राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि वी आर पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, बट हम ये नहीं कि एक चिड़िया है और एक गाय है. ह्यूमंस तो सारे ह्यूमंस ही हैं, राइट? सो उस पे कैसे नहीं हो. इट कुड बी फूड सेंसिटिविटी एंड एलर्जीज कुड बी डिफरेंट, Right. बट बेसिक स्टिल रिमेन सेम. तो Yes. वो कैसे कह सकते हैं आप, राइट? बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं व्हेन इट कम्स टू पीपल इन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग. सो या, if you educate yourself and if you add value to yourself and you upgrade yourself, it gives a lot of query answering for your client. And that's the game changer, because when you answer correctly and you give a solution to your client, then you are winning a client for life, and you are going to get more of references as well. So Yeah. ये आपको मॉनेटरी टर्म्स में आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज यू गेट दैट फेथ. You really get that faith because they know they'll come up to you. I also get questions and sometimes things on my messages. I'm not feeling good. Now, what do I answer this? Then I have to ask, is it because of the workout? I mean, is this pain, soreness? No, I'm feeling very low today. Can you please call and talk to me? Mm. So that is the time they like sometimes मुझे लगता है कि हुआ क्या है. Like then I call them, आप बताओ. नहीं मुझे कल रात से I'm not, मैं workout करके आई थी, I was very good, this and that. And then you tell them, अब आपने खाना ढंग से नहीं खाया था, आपने पानी नहीं पिया, you're feeling dehydrated. That is what keeping your mood down. तो Mm. रिफ्रेश करो. So as a coach आप उसको बात सुन सकते हो, right? It's बात भी सुन सकते हो ना. You can tell them ना कि you should be adding this. और there are questions that मैंने वर्कआउट जब स्टार्ट किया था मंथ में तो सब अच्छा चल रहा था, अभी स्टार्ट फीलिंग मोर फटीग. Yeah. इसका मतलब उसका न्यूट्रिशन या फ्यूल में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहा था, अभी वो डिक्लाइन हो रहा है. सो Right. दैट नॉलेज इज गोइंग टू इमीडिएटली टेल यू एंड मेक्स यू अंडरस्टैंड कि अच्छा. देन यू आस्क अगेन, योर क्वेश्चन बिकम्स मोर, what are you eating these days? Are you putting this? Are you putting this? Been asked you, I've asked you. Then you get to know, नहीं ये तो नहीं कर रहे. So not fueling and running your car on reserve, कितना दिन चलोगे, Hmm. right? So that helps you. So you can tell them कि अभी why are you feeling fatigue? It's because of whatever XYZ reason. If it is nutrition based, let them know. So If you they're also, stressed, if they're overworking, so that also helps. yeah. So mentioned that you did your certification in weight management, obesity, and in females you mentioned something, right? Yeah. Mm. Exercise, yeah. Female Exercise in exercise. females. So Yeah. that brings us to the next category, that is females in the fitness industry, Hmm. which we see. I mean, what do you see is the biggest challenge for females? क्या मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर मेल और फीमेल का ऐसा कुछ होता नहीं है.
इट्स अ ट्रेनर Mhm. अल्टीमेटली। Absolutely. Mhm. फीमेल्स बहुत कम है प्रोपोर्शनली, तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से फीमेल्स अभी भी क्या वो मतलब एप्रीहेंसिव है इस इंडस्ट्री के अंदर आने में? व्हाट डू यू थिंक इज द Mhm. प्रॉब्लम, और मे बी दे डोंट फाइंड इट lucrative enough, or maybe like too much of a work, too much of a physical work which is involved in Mhm. this? What is the what do you think is the problem here? See, before I mention a problem, I want to tell all the female coaches that this industry invites them with open arms. First thing. Right. And you can make the best of your career with fitness industry for the fact that you are very less in number. You do not have much of a competition. Right? Because आप बहुत कम हो, Yeah. right? Females कम है. So we lack good coaches. We lack good coaches. I can see there are so many female trainers available for only a very small. आपने आज सर्टिफिकेशन किया, 1-2 साल खूब धूम मचाई, ये भी करा, वो भी करा, you are staying, you are doing everything, and then there is a decline. और एक और Then चीज़ you panic. इसमें मैं एक और Mhm. चीज़ हाइलाइट करना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो जिम के अंदर एक्सरसाइज Mhm. स्पेशलाइजेशन या कुछ भी इस तरीके का होता है, इसके अंदर बहुत कम है। फीमेल ट्रेनर्स इन जनरल बहुत कम है, लेकिन बहुत कम. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर और भी कम है। सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे वो शायद डांस, एरोबिक्स या जूम्बा के अंदर सबसे ज्यादा फीमेल ट्रेनर्स आपको बहुत. मिलेंगे इन जनरल। Yes. और उसके बाद फिर शायद योग, बिकॉज माइट दे माइट थिंक दैट इट इज स्लाइटली इजियर टू परस्यू, थोड़ा सा रिलैक्सिंग है, काम है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब हमें डोले बनाने हैं, तो वो शायद लगता है कि So स्टॉप first कर। is the myth problem, yeah. So देखो एडवांटेज तो है, आई मीन बिकॉज आप एज यू मेंशन ना, तो ये प्रॉब्लम से पहले मैंने एक वो बता दिया कि भैया इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड, गो अहेड, लगे रहो, डू नॉट ड्रॉप योर करियर इन बिटवीन, बी पेशेंट, राइट? नाउ प्रॉब्लम एज यू सेड, तो ये मिथ का प्रॉब्लम है कि जिम में जाएंगे तो डोले बन जाएंगे, यू स्टार्ट लुकिंग लाइक अ मैन, ऑफ कोर्स नॉट डू आई लुक लाइक अ मैन फ्रॉम एनी एंगल. Right? मैं तो खुद बोलती हूँ, do I look like a man? Of course, when I work out, you do get pumped up, you feel good. या But yes, acceptance, थोड़ा सा social stigma भी रहता है लोगों को mentally. That, for example, even I had it. Like my own brother said, अच्छा जिम में जाके डंबल उठाओगी? He was like, तुम कराओगे? I was like, कितना कमा लोगी? And that day, I was like, I mean, it was in 2017 when he said that to me, when I did my uh, course with K11 and everything. There's like, क्यों करना है? क्या बच्चे छोड़ के तुम जा रही हो? क्या घर घर जाके ये करो? तुम जिम में जाके डंबल उठाओगे? So हम्म that was something. But now I know my brother is really proud of me. He's proud या of me when he talks to me, when he talks about me with us again. So because I created it, I mean, like, be it whatever it takes. If this excites you to be a part, not just this, but any industry. या If you बिल्कुल। really want to do it, then there should be no looking back. फिर तो आपको अगर सुबह उठना पड़ रहा है 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, I mean, like, that's your choice. You choose to be in this, right? I chose to be a part of this industry, and I love this. I've been into corporates for almost 7 years, 7 and 7.5 years, and now I'm at like 8 years plus with this. And for me, my corporate also helped me grew, and this is like a second life for me. So yes, I want to stick to the same industry, and I love training people. When it comes to I really love training people. So हम्म वो पैसा देख के मैंने इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी कि मुझे पैसे चाहिए. If you are good at your work, money follows. It राइट। just straight away money follows. तो So इन challenges for females is acceptance. Again, थोड़ा सा ये acceptance it is के घर से परमिशन नहीं मिलता है. Not many people is like gym में, because see, the fitness industry wakes up early. Our 75% of the work is done in the first half, which starts from like 6 to 5 a.m. or 6 a.m. in the morning till 11. हम्म Your work is done. तो वहां पे आपको maximum पैसा है. So being mothers, those who are coaches and trainers, for them it is very difficult, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है, और घर भी देखना है, फिर कुकिंग भी करनी है. देन यू हैव टू हैव अ स्किल कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा हम्म सा सपोर्टिव एंड पेशेंट. सो तो अगर करना है, मेक इट अ राइट चॉइस एंड देन डू इट. सो बेसिकली एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, दूसरा घर से परमिशन ना मिलना, कि हमारी सोसाइटी में भी परमिशंस ली जाती हैं अपना करियर चूज करने के लिए भी, ऐसा होता है।
यस, यस। वी कांट डिनाई दिस, ओके? हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम अभी भी उस स्टेज में है जहाँ पे हम लोग परमिशंस लेते हैं अपना करियर चूज करने के लिए या लाइफ पार्टनर चूज I करने mean, के लिए। again, hey, I mean, you can't do anything about it. I mean, because uh, it's just there. या It's just there, सो right? So, एक तो ये नहीं हो होता। गया परमिशन वाला सीन हो गया, दूसरा सोशल स्टिग्मा हम्म, यू सेड इज हम्म, एसोसिएटेड विद दिस, राइट? हम्म। सो दो चैलेंजेस हैं फीमेल्स के लिए इस दो इंडस्ट्री। challenges हैं। Second, I tell you, मीन जो मुझे ऐसा लगता है कि इज लाइक हर जॉब में 8 घंटे तो मिनिमम है। हम्म। Be it you're working in a bank, you're working in a corporate MNC, or be it whatever, 8 घंटे कहने के होते हैं। अभी हम सबको पता है कि 8 घंटे कहने के होते हैं। इट रिक्वायर्स मोर ऑफ योर टाइम, राइट? 9 घंटे 10 घंटे है, देन फिर ट्रैवल, नॉट, देन व्हाई नॉट गिविंग टाइम टू दिस इंडस्ट्री, being in a gym and giving time. People don't find it exciting, females don't find it exciting, उनको ये एज अ पार्ट टाइम लगता है, हम्म। राइट? कि मैं पैसिव इनकम, इससे मैं पार्ट टाइम ये कर लेती हूँ, थोड़ा सा कर लेती हूँ। हम्म। सो हेंस, क्योंकि वो एक माइंडसेट है कि यार नहीं, पूरे दिन कौन रहेगा, राइट? मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, एक शाम का कर लेती हूँ, दैट इज डन। 2 घंटे सुबह कर लूंगी, 2 घंटे शाम कर लूंगी, एंड दैट इज डन। सो बिफोर यू यू जंप इनटू दिस इंडस्ट्री, यू शुड बी कंप्लीटली इनटू इट, राइट? कि फिर आपको ये टाइम नहीं देखो, फिर आप टाइम मत देखो, क्योंकि आप टाइम बैंक में भी काम करोगे ना, तो सुबह आपको अगर 10 बजे खुलता है बैंक, तो आपको वहाँ पे 9:15 बजे होना पड़ता है, बिल्कुल। राइट? अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एन एयर होस्टेस, यू डू नॉट सी योर टाइम। देयर आर 12 hours, there are 14 hours of shift time that you do it, and you cannot try for it. And this is, I tell you, it's a very safe industry. Yep. Things are changing so good. We are getting such beautiful gyms around, like people are more active, and the best part is we have more of female clients now in Mm. compared to what was 5 years down the line. If I see more of female clients more in the crowd, and they are looking for coaches. They are So, looking for coaches so that to brings teach, to train them. Yeah. my second question, which is क्या चेंजेस देखे हैं अभी पिछले 7-8 सालों में, सिंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट Mhm. प्रोफेशनली, यू हैव चेंज्ड योर प्रोफेशन, यू स्टार्टेड ऑफ Mhm. इन 2014 परहैप्स, और अब से लेके अब तक 8 साल हो चुके हैं, 9 साल हो चुके हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं अभी? Changes, client base पे अगर मैं बात करूँ, हम्म। there is a huge number of growth in female clientele, ओके। right? कि clients बहुत आने लगे हैं. The footfall in the gym of female has gone up, राइट। right? They've started understanding. और ये blessing in disguise तो नहीं बोलेंगे, गलत वर्ड होगा, but yes, अभी कोविड के बाद भी अगर हम देखें, so ये growth और हो गया है, because राइट। राइट। everybody understand that there is no substitute, there is nothing else apart from your health. So राइट। people are more बोलते हैं, it's an eye opener for them when they knew, जब सबको पता चला ना कि यार इम्यूनिटी ही सब कुछ है, तो इम्यूनिटी सिर्फ घर पे बैठ के नहीं बनेगी, ये सबको पता है। सो एवरीबडी वांट्स टू बी, सो दैट इज वन चेंज कि आपका फुटफॉल बहुत अच्छा हो गया। द इंडस्ट्री इज बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। व्हेन आई से ऑर्गेनाइज्ड, there are very good pay masters in the industry. When it comes to gyms, there are good gyms, there are good company who are doing very good business, not just as companies but as employers also. So whatever team they hire, they do full justification with providing them good salaries, good incentives, clarity, and all, which I've come across. So I see that change. And now, because the coaches are now more सर्टिफाइड, अभी सिर्फ सर्टिफिकेशन का ना, पहले एक वो था कि एक एक महीने का करके आप यू आर जस्ट सर्टिफाइड, और नॉन सर्टिफिकेट ट्रेनर्स बहुत थे, राइट? नॉन सर्टिफाइड थे, बस जिसकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, आज जिम में लग। सो जो उस जिम के अंदर में जो हाउस बॉयज भी, जो हाउसकीपिंग के भी थे, वो भी रोज डंबल उठा के थोड़ी बॉडी हुई, तो उनको भी लगा दिया काम पे कि या चलो लोअर टी शर्ट, तो अभी वो नहीं है। So बिल्कुल। people know the difference of a certified coach, which is very good thing. So they look for it. They look for experience. They look for educated coaches. So राइट। that's the advantage. सो ये Yeah. So मतलब that's the biggest advantage. या change in client mentality, more female clients now. So ये एक अच्छा आपने चेंज देखा है जो अभी हुआ है पिछले 8-9 सालों के अंदर। Mhm. Yes. Yes. फैंटास्टिक। Totally. Mhm. तो फिटनेस इंडस्ट्री जो इतने पिछले सालों में काफी चेंज हुई, पिछले 5 साल में तो काफी ज्यादा चेंज हुई है।
सो हम्म। फीमेल रिप्रेजेंटेशन आपके हिसाब से कितना है अभी? मतलब क्या आपको लगता है कि फीमेल ट्रेनर्स अभी बढ़ रहे हैं, या फिर उतने ही हैं जितने थे, या कुछ चेंजेस आए हैं इसमें? मेरे को इफ आई सी ऐसे सर्टिफिकेशन तो हर महीने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत हो रहे हैं। जैसे पहले लाइक व्हेन आई डिड इट आई वाज लाइक देयर वर 3 पीपल इन द एंटायर ग्रुप ऑफ 46 का जो बैच था हमारा, आई गेस 36 46 वी वर देयर, बट वी वर ओनली 3 गर्ल्स, like 3 females. So like me, one of my friend who owns a gym, राइट, she holds 2 gyms now. Trans Fitness नाम से उनका gym है, and then there was another girl. तो था, but now I see more of girls कि अगर अगर 30 का बैच है तो उसमें कम से कम 12 लड़कियां तो होती हैं, 10 भी होती हैं, कभी 6 भी होती हैं, बट yeah, the number is going up. Again, unfortunately, सब सीख तो रहे हो लेकिन जा कहाँ रहे हो? I beg to differ कि सब सीख तो रहे हो लेकिन सीख के कहाँ जा रहे हो? Because when it comes to hiring good coaches, and I look for them to make them as a part of my team, and I don't see them. सो I मे don't see बी them. I क्या don't. क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि यू आर इन अ डिफरेंट लोकेशन एंड दे प्रोबेबली आर इन अ डिफरेंट लोकेशन एंड दे डोंट वांट टू ट्रैवल, फॉर इंस्टेंस? ऐसा हो सकता है आपके हिसाब से? देखो वो भी एक फैक्टर है, बट व्हेन यू हैव so right now I'm like based in Gurgaon, right? So the employees I work with, we have a current job placement for Delhi NCR. When we say NCR, is not just Gurgaon, it's Delhi also, it's Faridabad also, it's Noida also, and we are coming up with more. But when we put in the female coaches, by default they look for comfort, too much of comfort. When I say too much of comfort, I mean like please don't feel bad about it, but yes, उनको अब मैं घर के नीचे जिम तो नहीं दे सकती ना कि एकदम आपके सोसाइटी गेट से बाहर निकलते ही हमने अपने जिम को ले आए या काम को ले आए, वो नहीं कर सकते। और फिर वो है, आई मीन लाइक दैट्स व्हाट इट इज। सो ये एक वो हो जाता है कि नहीं, टाइम में जल्दी नहीं आऊंगी, तो जब टाइम ही वो है, राइट, Precisely. तो आना पड़ेगा। उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। और फिर हम स्प्लिट में नहीं, अगेन वी अंडरस्टैंड द प्राइम टाइम फॉर जिम बिजनेस इज द मॉर्निंग 5 आवर्स फ्रॉम 6 to 11 एंड देन द इवनिंग, राइट। सो आपका जो शिफ्ट होता है, ब्यूटी इज कि आप शिफ्ट में, स्प्लिट शिफ्ट में काम कर सकते हो और आप स्ट्रेट शिफ्ट में भी काम कर सकते हो। बट आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, डू यू नॉट वांट टू मेक गुड मनी? वी ऑल डू, बट देन व्हाई डू यू पुट इट ऑन द वेरी, नहीं मैं एक साथ स्ट्रेट शिफ्ट करूंगी, तो मतलब अगर आप 8 9 घंटे का शिफ्ट है तो आप सिर्फ 4 घंटे काम करना चाहोगे, वो भी आप लेट आओगे और 4 घंटे खाली खड़ा रहोगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप यहाँ पे कैसे ग्रोथ लाओगे? बिल्कुल, How बिल्कुल। would you expect that you will grow, you will make money out of it, राइट। right? So वो आप एक वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। एंड देन व्हेन यू आस्क देम, व्हेन यू टेल देम, तब फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर देन आई डोंट वांट टू नेम इट, बट या देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस एंड थिंग्स। सो वो इफ द कोचेस आर देयर, yes they are educated, but they are very few, and those few are into comfort zone, or they just do it for a couple of months and then they get fed up, नहीं मेरे को नहीं करना है, so बिल्कुल, बिल्कुल। don't do it. दूर से थोड़ा That's, I guess you are also aware of it. नहीं, मतलब दूर से थोड़ा-सा फैंसी लगता है कि हाँ, फ़िटनेस इंडस्ट्री में कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर व्हेन इट्स द रियल जॉब व्हेन दे हैव टू डू, तो हर जॉब के अंदर कहीं न कहीं तो पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। तो जैसे ही बिल्कुल बेलने पड़ते, वो कौन सा जॉब काम है जो होती है, बैठे बिठाए आपको दिखता है? राइट, सो पापड़ बेलने की बारी जब आती है तो वहाँ पे फिर आपको लगता है, अरे यार, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। या So, yeah. So what एब्सोल्युटली। kind of changes do you want to see with regards to this thing? एक तो वैसे ही फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन कम है इस इंडस्ट्री के अंदर। So what kind of changes do you think you want to see in the future? See, I of course, education wise, because they are very good schools which are doing an excellent job in teaching and educating students, be it a female, be it a male. सो एजुकेशन एक सही इंस्टीट्यूट से लीजिए। पैसे बचाने के चक्कर में या समय बचाने के चक्कर में छोटे-मोटे जगह पैसे मत डालिए। दैट्स माय फर्स्ट थिंग, दैट इफ यू रियली वांट टू गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, डू सम R&D, मेक कॉल्स, विजिट दोज़ स्कूल्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू लर्न, एंड देन you decide. Not just because your friend or you see some marketing posts on the Instagram or Google के सर्च इंजन में भी जहाँ पैसे ज्यादा मिलते हैं ऐड के वहां ऊपर आ जाता है. So go through the list, visit the places yourself, and then you make a decision. And do not go for a short term course, because short term course में आपको short term knowledge ही मिलेगी, which is not going to take you for long run,
राइट? कि आपने एक 15,000 का कोर्स है तो मैं याली अकेडमी से कर सकता हूँ यार 1 महीने में सर्टिफिकेशन। डोंट डू अ कोर्स फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशन। Please mind it that it is an education. It is not about just lifting a dumbbell, doing a bicep curl, or putting it over the head. It needs a lot of education. So educate yourself and be patient. When I say be patient, आप इसमें भी अगर आप 2-3 महीने का कोर्स करते हो ना, उसके लिए भी आपको बहुत ग्रिलिंग करनी पड़ती है, बिकॉज जब तक आप खुद पे अप्लाई नहीं करोगे, द मोर यू डोंट स्टडी, यू कैन नॉट डिलीवर इट, राइट? अगर आप एक्सेल भी, फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर्स में भी कहीं जॉब में है, एक्सेल भी लर्न करना पड़ता है ना, तो फॉर्मूलेज आप याद कर रहे हो ना कोई, तो जब तक 10 बार कोई फाइल फॉर्मेट नहीं करोगे, वो उंगलियों पे नहीं आता है। You don't learn the shortkeys, you don't learn it. So you need to educate yourself more in a better fashion so that you Absolutely. deliver best. And add on to yourself. And when I say add, groom yourself. We need a lot of grooming in fitness industry. Yeah, We do. absolutely. The male coaches, they need to understand, look, having a good body and looking like a bouncer is not what a client looking for, right? उसको bouncer नहीं चाहिए, उसको एक educated coach चाहिए. So look like that, present yourself like that. And for females also, when you are calling yourself as a trainer, as a coach, work on your body comp also, right? Prepare yourself that way. I mean, आप खुद के body comp पे भी ध्यान दो, because there are very good coaches. When I see them, then it's like knowledge बहुत अच्छी है, trainer बहुत अच्छा है, but again when I see their body comp, like it could be any XYZ. I'm not putting that, but if how long have you been training? People put it as an excuse that कि ना मेरी ये कंडीशन थी इसलिए ऐसा हो गया, बट इसके पहले ये हुआ, उसके पहले व्हाट इज योर करंट लाइफस्टाइल? आर यू नॉट चेंजिंग इट? Mm, As a coach, if you cannot do a change to yourself, you will never find any other person confident in you that you can make a difference to her or his life. right. So that goes for both, for males and females both. So तो educate yourself from better institute. ये मेरे को Yeah, एक go ahead. ये अच्छा पॉइंट था विच यू जस्ट मेंशन्ड कि आपके पास अगर नॉलेज अच्छी है लेकिन आपका बॉडी कॉम्प अच्छा नहीं है तो मुश्किल है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर इसको अदर वे अराउंड कर दें, अगर आपका बॉडी कॉम्प अच्छा है लेकिन नॉलेज नहीं है Hmm. तो उस केस में भी So again, मेरे को इसमें short term है ना, या सो that is a short term success ना. सो You get आई easy clients, but you won't be able to retain them. Your retention won't work. तो उसमें क्या हुआ था, एक बार आई वाज इंटरव्यूइंग समबडी एंड सिंस वी नीडेड अ फीमेल ट्रेनर आई वाज इंटरव्यूइंग अ फीमेल एंड हु वाज वेरी गुड और body comp wise speaking, everything, oratory skills, they were pretty good, पर Mhm. knowledge wise very bad. और वहाँ पे Mhm. बड़ा मुश्किल था बिकॉज आई हैव टू आई नीड टू हैव अ फीमेल ट्रेनर और यहाँ पे एक Mhm. टेबल फीमेल ट्रेनर है लेकिन नॉलेज है ही Mhm. एब्सोल्युटली गार्बेज दैट वे। सो मुझे So एक that is what I'm saying. Na, it एक is a two-way process. We have to polish. We have to polish. तो Yes, वहाँ पे मुझे एक need सवाल that. पूछना पड़ा कि भाई आपको अपने लुक्स के बेसिस पे जॉब चाहिए या फिर नॉलेज के बेसिस पे चाहिए, सिंपल। तो Mhm. तो मतलब इट वाज अ बाउंसर, उन्होंने कहा नॉलेज, मैंने कहा राइट नाउ यू डोंट क्वालिफाई फॉर इट, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू कम अगेन इफ यू वांट। पर क्योंकि शी वाज इट वाज अ Mhm. पार्ट टाइम थिंग फॉर हर, जैसे अभी मेंशन किया, तो शी Mhm. चोज द मेन प्रोफेशन और ये तो खैर था ही वैसा कि हो गया तो हो गया, Mhm. यू नो सो Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट That's नोट्स। what it is. Na, छोटे-छोटे थोड़ा सा कोर्स किया, छोटा सा वो कर लिया, चेंज कर लिया. And on that note, I also want to bring you one thing in notice. हाँ। क्योंकि आपने फैट लॉस किया है. I'm talking about fat loss. आप मोटे थे, आपने फैट लॉस किया, आप कोच नहीं हो. यस। You are, don't call yourself as a coach and start training people. For heaven's sake, don't do that blunder. You are putting not yours, but others at risk, right? So, जो social media का ज्ञान उठा के ना, please, influencers मत बनिए. सो विद आवर दिस थिंग कि क्या फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स जिस तरीके से हैं अभी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ जो अभी हमारा सिनेरियो है वो बहुत मिक्स सिनेरियो है कि फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स बहुत कम है, राइट? सो जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है बट दे वांट टू कम, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू young girls who want to pursue a career in fitness or maybe those who want to change their careers to fitness? क्या कोई advice, particular advice which you would like to give them?
Advice is the only thing, the only one advice I can give them. Don't do a short-term course, right? Don't go for do a research on the good academies available for education, because this career is not just about having a chiseled body, and it might look very glamorous from the outside. बहुत अच्छी body हो जाती है, आपको सिर्फ training ही तो करानी है. It takes a lot of education. It takes a lot of investment of your time in learning. So be patient, because you're switching a career or you're willing to make a career. So go for educating yourself with some good education, and good academies and good schools who are into the business, right? First thing is that, and then be patient and keep upgrading yourself. Patient in terms of, don't expect कि आप एक ही दो महीने में इतना इंसेंटिव बन जाएगा या इतना सारा पैसा बन जाएगा. Don't come into just for the money, Hmm. right? So initially मान के चलो कि मुझे 4-6 महीने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर एज़ अ एमबीए में भी आप 4 लाख लगाते हो अपनी फीस में, 4 आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो 4-5 लाख इज़ द मिनिमम फीस, Yeah, राइट? yeah, yeah. आपको जो पहला इंटर्न को तो सैलरी भी नहीं देते हैं। जो एमबीए इंटर्न्स आते हैं उनको तो 6-6 महीने तक सैलरी भी नहीं मिलती है। एटलीस्ट वी आर हैप्पी कि इस इंडस्ट्री में घुसते सैलरी तो मिलती है। अगर आप जनरल ट्रेनर भी काम कर रहे हो तो कुछ सैलरी तो मिलती है ना आपको, Yeah. राइट? सो आप वो करो, एंड सेकंड, लर्न, ऑब्जर्व, स्टडी, राइट? क्लाइंट के एप्स बनाने में मत जुट जाओ। इसको तो Hmm. ट्रांसफॉर्मेशन कराऊँगा ही कराऊँगा। राइट, एकदम से चेंज मत करो. बी पेशेंट विथ योरसेल्फ, विथ योर क्लाइंट्स, लर्न, ऑब्जर्व एंड देन अप्लाई. Fantastic. That's the only thing I can say. Yeah. Fantastic. So it was lovely talking to you, Amrita, because Pleasure. फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स का इंडस्ट्री के अंदर होना बहुत ज़रूरी है. वी ऑल एक्नॉलेज दिस फैक्ट. और एज अ Yes. सोसाइटी भी हम लोग अभी भी डेवलप कर रहे हैं. और ऐसा अभी भी है, होता है कि फीमेल क्लाइंट्स को कभी कभी फीमेल ट्रेनर्स ही चाहिए होते हैं और हमारे पास नहीं Yeah. है ना. एक वो भी एक सिनेरियो. सो इट वाज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक यू एंड योर लाइक्स कि वो लोग इंडस्ट्री के अंदर हैं, दोज हु आर वेल वर्स्ड, जो कि अपनी स्किल के अंदर अच्छे हैं, दोज हु आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट थिंग्स टू चेंज दिस इंडस्ट्री. Mm-hmm. सो इट वाज Mm-hmm. लवली टॉकिंग टू यू. एंड Pleasure. हम लोग दोबारा से मिलेंगे. हम लोग दोबारा से बातचीत करेंगे कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, प्रोबेबली स्पेसिफिकली योग के ऊपर या पिलाटिस के ऊपर. और Mm-hmm. लोग जल्दी मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड इट Thank वाज you so much. Was such a pleasure. मुझे टाइम भी पता नहीं चला. सेम That now it's है. time for me to train people, so I'll be leaving. या मैं Right. भी वही देख मेरे रहा था कि दिहाड़ी का टाइम हो गया. कब इतना ज्यादा टाइम एकदम से निकल गया. बट लवली हाँ. टॉकिंग टू यू एंड लेट्स मीट अगेन सून. Yes.